have to apply your basic concept on a problem. That is the only thing we can do into the mechanics. So this is one of the beautiful topic where there is not unnecessary derivation is there. There is not unnecessary theory is there. There is not unnecessary formula is there. We have to just use the common sense physics here, isn't it? Let's try to go for first. This is one of my favorite question because we can just use all the concept from this particular question of the parallel axis theorem and perpendicular axis theorem. So this is basically a rectangular plate, and this is in xy plane. So this is along x-axis, and this is going to along y-axis, and the mass of this rectangular sheet is m, and this is all completely solid part, and the length is basically, let's say this is a along x-axis and b along y-axis. So what we have to do, we have to calculate the moment of inertia of this whole system about the axis which is passing through one of the corner and perpendicular to this particular plane. So this is my question. So obviously, if I am saying cross, my axis is going something like this. Okay, this is the way that you can discuss your moment of inertia axis, or you can take something. This is my direction. So obviously, we have to calculate moment of inertia about this axis. This is your axis. Okay, and there is nothing to do with the inside or outside. We have to just take the axis. Okay. Now, so what should be idea? And obviously, this is at the origin. The center of mass is at origin. So what should be idea? If somehow we can calculate the moment of inertia about this axis, and which is passing through center of mass and perpendicular to plane, then we can use parallel axis theorem. Use kar sakte na? These two axes are parallel to each other. Remember this thing. These two are parallel to each other. So we can easily use it. So if we can use it as a parallel axis theorem, but the challenge is that how we will get the moment of inertia about this Iz, which is passing through center of mass. So here we can use the parallel axis theorem because mass is distributed into what? XY plane. So can I write Iz is equal to, and this Z is passing through center of mass. Okay, this Z is passing through center of mass. So Iz is equal to Ix plus Iy. Everyone is comfortable? Yes, sir. And once we calculate Iz passing through center of mass, we calculate this distance, we can find the moment of inertia about this axis, which is perpendicular to this. So what is the base of this problem? The base of this problem is that we have to calculate what is my Ix or Iy. So this is the real challenge. Other thing is just a manipulation of your formula. So what is Ix? So Ix will be integration into dm and something square. Can you tell me what is this something square? प्लीज थोड़ी गलती कर सकते हैं. जस्ट टेल मी, जो भी आपको समझ में आ रहा है वो क्या है. Here is real concept. What is this particular thing? Y. A plus B, sir. This is variable. This is not a constant. Sir, Y. Why? Very good. Why? Because you are taking this as your axis, the perpendicular, and you can take some mass, something like this, isn't it? This is your dm. So about x-axis, what will be perpendicular distance? Obviously, it will be y. So you have to go for y squared dm. This is Ix is equal to y squared dm. Ixx you can also. Now, you can just go for moment of inertia tensor.
Just go for moment of inertia tensor. What will be Ixx? बताइए क्या होगा? Just tell me. Y square plus Z square dm. देखो बिल्कुल ही सारा चीज कनेक्टेड है, डरने की जरूरत नहीं है. And what will be Z here? 0. 0. Look at the all theory are hidden into moment of inertia tensor. So why I deliberately teach moment of inertia first, tensor first, then I go for this part +2 part, because we have the overall picture first and then we can go for a specialized thing. Are you getting my point? Yes, So sir. this is actually Ixx, which is Ix. This is actually Ixx. Now, the next challenge is that how you are going to write dm. So if you are going to write, because here you can just put z is equal to 0. So now what is your dm? Your dm is equal to, what will be dm? Just tell me. M by AB dx into dy. Is that Cartesian coordinate is good coordinate for this particular system? Yes, sir. Is that Cartesian coordinate is good coordinate for this particular system? Yes. Yes, sir. Rectangle can be easily visualized into Cartesian coordinate. So we can use it. And now, and this will be single integral or double integral? Double integral. Double integral, because mass is confined into the two-dimensional plane, and we can just go for a very nice integration. M AB dx, and x will be from where to where? Minus a by 2 to a by 2. Very good. Minus a by 2 to plus a by 2. And about y? Y square dy minus b by 2 to b by 2. What will be value? Just tell me. mb square by 3. आ रहा है क्या? Sorry, mb square by 12. Is that this one? Yes, sir. ठीक है ना? And now you can see the symmetry of rod, isn't it? What is moment of inertia of the rod about its center of mass? ml square by 12. ml square by 12. And you can make a rectangular with the help of rod. So why the moment of inertia of this particular rod is hidden inside this particular moment of inertia of this particular rectangle? If you can put something like this lot of rods, you can make this particular moment, this particular rectangle. Now I can write my Iy directly, but I will write my formula for the, what will be this? This is nothing but what? X square dm, and this value is equal to m upon ab integration. What will be this value? X square dx minus a by 2 to plus a by 2, and here is dy minus b by 2 to b by 2, and that value is ma square by 12. But in the examination, you can, if you will calculate it, you can write it directly. What will be my Iz? We can use this particular theorem, and when you are going to use this particular theorem, then you have m upon 12 a square plus b square. Everyone is comfortable? ये भी एग्जाम में आ सकता है. What is moment of inertia about this axis? But I am going into next level. So we have used perpendicular axis theorem, and then we can go for parallel axis theorem. And this Iz is actually my ICM. So you have to decide what is your ICM. Are you getting my point? There are n number of axes passing through center of mass, but we have to choose our axis very intelligently such that we can use it. Everyone is comfortable? हाँ या ना? ना? चले गए सारे? Comfortable, sir. सिर्फ पुनीत कंफर्टेबल होता है, बाकी लोग अनकंफर्टेबल रहते हैं. हाँ, चलो. Now what we have to do? You have to calculate moment of inertia about A. What will be this one? ICM
plus m d square. What is ICM? m by 12 a square plus b square plus m. What is your d? What is your d? बताइए d क्या होगा? Root under a square by 4 plus b square by 4. Very good. So d is equal to a by ये डिस्टेंस होगा ना? Yes. So this is a by 2, this is b by 2. So a by 2 whole square plus b by 2 whole square root under whole square. And I think we will get answer something like m by 3 a square plus b square. Yes? Yes, sir. Yes. Sir. And this is wonderful. ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आप प्रिपेयर रहोगे. Just you have to use concept very nicely and you have to a by 2 और b by 2 किस लिए से? तुम बताओ कैसे लिए? सब चीज मैं ही बताऊंगा. हाँ, ये डिस्टेंस निकालना है. निकालो ये डिस्टेंस क्या होगा. दिस इज योर ICM, दिस इज योर IA पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम. तो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ ना? बोलो हाँ या ना? यस सर. बताओ ये डिस्टेंस क्या होगा. अरे पैथागोरस थ्योरम पढ़े हो? यस सर देख रहे. बताओ क्या होगा. यस सर a by 2 और b by 2. है a by 2 this distance, b by 2 this distance. ये डिस्टेंस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. हाँ ठीक है. यस सर. चलो आगे बढ़े. चलो गुड. लेट्स ट्राई टू गो फॉर नेक्स्ट वन. फटाफट फटाफट करते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना. ये सारे +2 लेवल के क्वेश्चन है. सो बट यस, कोई भी क्वेश्चन टफ या आसान नहीं होता है, सीखने से मतलब है ना. लेट्स गो फॉर रिंग. सो दिस इज माई रिंग. ओके, so first I have to find moment of inertia about z-axis which is passing through center and which is perpendicular to this. This is mass m, radius is r, and mass is distributed here. Okay, first is this one. So first किसके about निकालना है? IZ. Second किसके about निकालना है? About the tangent. So let's say this is A dash. Clear है ये? Yes, sir. चलो. So इसके about अगर आप निकालोगे, you can take mass element कहां लेंगे ये बताओ रिंग पर? On the radius. On the circumference radius. Yes, sir. Yes, sir. On the circumference. ऐसे पढ़ाओगे पुनीत? हाँ? नहीं सर. बच्चे भाग जाएंगे, है ना. So this will be DM. ठीक है. Yes, sir. So this is your DM. चलो इंटीग्रेट करते हैं. मुझे इसमें बड़ा इंटरेस्ट है, मैं तो ये आप ही से पूछूंगा. DM ये तो फॉर्मूला लिख लोगे ना. दिस इज योर IZ. व्हाट विल बी दिस स्क्वायर? समथिंग स्क्वायर. वहां पर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है. हमेशा ऐसे ब्रैकेट में लिखोगे फिर DM लिख देना. फिर पूछना अपने आप से व्हाट इज दैट समथिंग स्क्वायर. क्या होगा? पुनीत के अलावा, सौरभ के अलावा बाकी लोग बताओ. रूपाली बताएगी. आइए क्लास में. Yes, sir. चलो बताओ रूपाली क्या होगा. आज काफी कम बच्चे हैं, घूमने गए हैं सारे. R square, कैपिटल R स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर. capital R. वेरी गुड, वेरी गुड. सो दिस और इन दोनों के बीच में है ना, दिस इज योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस. हमेशा ये जो रेडियस होता है सरकमफ्रेंस पर क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, नाउ व्हाट इज योर DM? देवव्रत है, देवव्रत बताएगा. यस सर. बताओ. m by 2 pi r. m by 2 pi r. r. और ये तो बाहर आ जाएगा. यस सर. वेरी गुड. और क्या होगा? R स्क्वायर. और अंदर ये तो तुमने dr डेंसिटी बताई, सिग्मा, सॉरी sir. लैम्डा. लैम्डा बताया तुमने, है ना.
और क्या होगा? सर R d थीटा। कैपिटल आर या स्मॉल आर? सर कैपिटल R। वेरी गुड, आर टी थीटा। ठीक है, थीटा को इसमें वेरिएबल क्या है? थीटा। थीटा। आर क्या है? कांस्टेंट। Constant. सो थीटा को कहां से कहां लेके जाओगे? 0 टू 2 पाई, है ना? सो व्हाट विल बी आंसर? वेरी नाइस, एम आर स्क्वायर। दिस इज अबाउट आई, सेंटर ऑफ मास, एंड परपेंडिकुलर टू दिस वन। नाउ अब हमें इसके अबाउट निकालना है, तो बताओ तो क्या करना पड़ेगा? सर आई एक्स और आई वाई इक्वल होंगे। वेरी गुड। तो हम अगर ये आई वाई निकाल लें, इसको मैं वाई कर देता हूं, इसको एक्स, मेरी गलती है, एक्स और वाई तो थोड़ा दिखाई दें, है ना? तो अगर मैं आई वाई निकाल लूं, एंड देन वी कैन इजिली यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक है? एंड हाउ आई कैन यूज आई वाई? कैन आई राइट आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई? ठीक है? यस सर। अब मुझे ये बताओ, इफ वी आर गोइंग टू चेंज एक्स टू वाई, is that distribution of mass is going to change? No, sir. No, because it is circle, it is supersymmetric, है ना? So I can write I, जो बिहेवियर आई एक्स का होगा वही बिहेवियर किसका होगा? आई वाई का होगा। कैन आई राइट दिस थिंग? Yes, sir. And this is your iz actually. So this will be m r square is equal to ix को भी iy लिख सकते हैं, this will be iy, and you can write iy is equal to m r square by 2. Clear है ये? Now I have calculated my moment of inertia about this axis. What will be moment of inertia about this axis? What you will do? The parallel axis theorem. Parallel axis theorem, and this is also passing through center of mass, isn't it? यस सर। Yes, sir. और अगर सपोज करो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस के पीछे लिए पूछा जाता तो क्या करते? दिस इज पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर, दिस इज ऑल्सो टेंजेंट बट पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर, तो क्या करते? तब सर IZ के पैरेलल IZ आईजेड के पैरेलल ले लेते। थोड़ा ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा ध्यान रखोगे प्रॉब्लम इजिली सॉल्व होता जाएगा। ओके, चलो, सो दिस विल बी एम आर स्क्वायर बाई 2, एंड देन वी विल गो फॉर आई ए डैश इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, सॉरी इसको क्या लिख दे, आई वाई और आईसीएम कर देते हैं, आईसीएम प्लस एमडी स्क्वायर। व्हाट इज आईसीएम? दिस आईसीएम, देखो सेंटर ऑफ मास से इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस गुजर सकते हैं, हमें कौन सा एक्सिस लेना है वो हमें डिसाइड करना है, ये बार बार आप रिकॉल करो। तो दिस विल बी एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम, व्हाट इज डी, इज नथिंग बट व्हाट, आर स्क्वायर, this will be 3 by 2 m r square. Everyone is comfortable? यस सर। Yes, sir. Okay, let's go for next one. चलो, so let's go for a disk. So आपको किसका किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखना है वो मैं लास्ट में जॉट आउट कर दूंगा, तो इसके बाद डायरेक्टली आप उसको पैरेलल एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू करते जाओगे। नाउ दिस इज डिस्क, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रिंग एंड डिस्क? स्मार्ट आंसर चाहिए। Sir, the mass does not lie only on circumference. इसको ऐसे भी तो बोल सकते हो, mass is distributed in a plane, and where mass is distributed in a line, that is linear density, here is surface type की density होगी। Anyway, so we have to calculate moment of inertia about this axis, again this axis, okay, a dash, what is idea? बताओ पहले किसके अबाउट निकालना होगा? आई वाई, आई वाई के लिए निकालने के लिए क्या निकालना होगा? आई जेड,
आईजेड के लिए आपको सबसे तो मेन एजेंडा क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट आईजेड. सो व्हाट इज आईजेड? दिस इज माय एक्स, दिस इज माय वाई. व्हाट इज आईजेड? समथिंग स्क्वायर इंटू डीएम. अब यहां पर बताओ मास एलिमेंट कहां लेना चाहिए मुझे? सरफेस पे प्लेन. एट एनी डिस्टेंस, है ना, कहीं भी ले सकते हैं, है ना. एंड हियर नाउ दिस आर इज वेरिएबल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डीएम एंड व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस? R, small r. Small r. And small r is what? Variable now. Last problem में क्या था? Small r is, there is nothing called a small r. R is constant. So r is variable. You can take here also. You can take dm here. You can take dm here. You can take dm here. Anywhere you can take dm. Now we have to go for dm. What is your dm? M upon pi r square. And what is your dx into dy? R dr d theta. Isn't it? So this is your dm. हम लोगों ने बहुत कर लिया है ऐसा, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं इसे. सो माई आई जेड इज इक्वल टू आर क्यूब डी आर डी थीटा 0 to pi 0 to capital R. What will be value? And here is m by pi r square. What you will get? mr square by 2. Just check Yes, it. sir. Yes. Now what about iy? यहां पर क्या यूज करेंगे? Perpendicular axis. Perpendicular axis theorem. Again, I can say Ix is equal to Iy. Yes sir. or no? Yes, sir. Yes. So I can write it. This value is equal to 2 times Iy is equal to Iz. So what will be value? Iy is equal to mr square by 4. Isn't it? Now अगला क्या यूज करना है? Parallel axis. Parallel axis theorem. So IA dash is equal to ICM plus MD square. What will be this value? अब now ICM क्या है आपका? ये IY आपका ICM है ना? So and what is D? R square. R is. So that value is equal to 5 by 4 Yes, sir. mr square. क्लियर है ये? अब एग्जाम में सपोज करो ऐसा दे दे. सपोज देयर इज अ रिंग, देयर इज अ डिस्क. ये डिस्क है, ये रिंग है, and you have to calculate moment of inertia about this point. What will be answer? दोनों का रेडियस r है, इसका मास m है, रेडियस r है. What will be answer about this axis? बताओ. सर दोनों का इंडिविजुअली ऐड कर देंगे. कर देंगे. इसका इसके अबाउट निकाल लेंगे. क्या निकला था? 3 by 2 3/2 mr square. mr square. रिंग का इसका क्या निकला था? 5/4 5 mr by square. 4 mr square. क्या आ जाएगा आपका? 11/4. 11 by 4 mr square. That's it. है ना? So इस तरह से आप इजिली कर सकते थे. ओके, लेट्स गो फॉर नेक्स्ट वन. चलो नेक्स्ट तो बहुत आसान है. एक सोचो, जेस्ट के भी एग्जाम में आया है, नेट के भी एग्जाम में आया है, गेट के भी एग्जाम में आया है. जैम में नहीं आया तो शायद जैम में दे दे कभी. सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी. एनुलर डिस्क है ए और बी का. व्हाट विल बी? एंड हियर इज मास. ये मास आपका यहां डिस्ट्रीब्यूटेड है. ओके, मास इज m. व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया? 30 सेकंड दूं क्या आपको करने के लिए? चलो करो फटाफट, 30 सेकंड में करो. चलो चलो चलो, थोड़ा नींद तोड़ते हैं आपका, है ना? फटाफट फटाफट. सर क्या आ गया? सर m/2 b square minus a square. हाँ, मुझे पता था तुम ही दोगे आंसर और तुम्हें गलत आंसर दोगे. Okay, अब पुनीत, मुझे तुम्हें दिल्ली बुलाना पड़ेगा. सर आ जाएंगे सर. पूछो क्यों? जी सर. पिटाई लगाने के लिए. सॉरी सर. ठीक है. स्मार्ट आंसर तो कैलकुलेट करो. हवाबाजी सिर्फ चलता है.
अच्छा सर, m टोटल डिस्क का मास है, राइट? जी ओके ओके सर. what will be answer? Anyone? M B square plus A square by 2. वेरी गुड वेरी गुड. आप क्या करोगे? यू विल जस्ट टेक द डीएम, है ना? एंड हियर एट m इज द टोटल मास. प्लीज, m इज द टोटल मास ऑफ एनुलर डिस्क. ये एक अलग प्रॉब्लम होगा और ये एक अलग प्रॉब्लम होगा कि दैट यू हैव डिस्क एंड यू हैव रिमूव दैट पार्ट, देन व्हाट विल बी द आंसर? दैट इज डिफरेंट इशू. अभी हम लोग करेंगे एक प्रॉब्लम, हम लोग वैसा भी करेंगे, है ना? सो दिस इज योर बेसिकली डीएम. सो व्हाट विल बी दिस? समथिंग स्क्वायर इनटू डीएम, यही होगा ना? व्हाट इज दिस समथिंग स्क्वायर? Small r. स्मॉल आर स्क्वायर. और सारा खेल ऐसा ही हो जाएगा, इजंट इट? सो स्मॉल आर डीएम की जगह पर क्या लिखे? m बाई पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. And here you will go for r dr d theta. d theta is 0 to 2 pi. This will be between a to b. और जब इसे कैलकुलेट करोगे, your answer will be ma square plus b square by 2. एग्जाम में इसलिए देता है कि बच्चे कहीं कंफ्यूज ना हो जाए. This is entirely different problem. That some will tell you that a disk has mass m, then you are going to remove it. Then what will be moment of inertia? Let's try to do something like this. एक ऐसा प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं. ओके? So there is a disk of mass m and radius 2r. So इसका radius जो है radius 2r. The mass of disk is m. What will happen? We will just try to remove a portion of a square of radius a such that center will coincide to each other. Center of disk and center of this square will coincide to each other. So make it a square, something like this. Okay. And this will be radius r. This will be radius r. Okay. So we are just removing this particular thing. So mass is confined into this region now. So initial mass is m. So initial mass is m. And after then we remove this particular square part from here. And now we have to calculate what will be moment of inertia of this particular part about axis which is passing through center of the system. So now can you please tell me I of disk about z axis क्या होगा? कंप्लीट डिस्क का क्या होगा? तो जनरल, इन जनरल सर ऐसे तो m r स्क्वायर बाई 2 होगा. So But m by 2 into 2r square. Yes sir. So this will be the disk, the moment of inertia about the disk and about z axis. Now, अब आप बताओ moment of inertia of a square, what will be that? For the अगर ये square, स्क्वायर जो हम अलग से निकाल लेंगे उसका क्या होगा? sir, ma square by 12. Let us assume its mass is m1 because you don't know what is really this mass. पहले इसका अलग से कर लिया. Yes? Yes sir. What will be this mass? Let us assume this mass is m1. And what is this particular value? बताओ. अभी क्या था? a square, sorry, r square plus r square by 12. Yes, sir. Yes sir. अभी क्या था? रेक्टेंगल वाला प्रॉब्लम है ना? Yes sir. Isn't it? ऐसा ही तो था. This is same thing, but here r both r is same. So what will be this particular value?
m1 by 6 r square. Now the challenge is, what is your m1? Yes या no? क्या challenge है? What is your m1? So what is your m1? You can write m upon pi into 2r square is equal to m1 into r. The density is same, isn't it? Density आपको बहुत help करेगा चीजों को easily calculate करने में. Everyone is comfortable or not? Yes, sir. So density is same. So what is your m1? बताओ. m upon 4 pi. M upon 4 pi. M upon 4 pi. Okay. So this will be m upon 4 pi is your. So we will put it here. So what will happen? M upon 24 pi r square. Now, अब इस कंप्लीट पहले इसका निकाल लिया ID, इसका निकाल लिया IS. अब कंप्लीट सिस्टम का जो निकालोगे, what will be that particular thing? ID plus IS. But this mass is going to remove from here. So this mass will be going to what? Negative mass, isn't it? Yes, sir. है ना? So what will happen? Basically, this will be m r square by 6 plus you will just get minus m by 24 pi into r square, isn't it? Yes, sir. And now you can easily calculate this particular value. क्या आ जाएगा आपका? You Sir. can take, हाँ बताओ. ID MR 2 MR square था. Yes, sir. So वहाँ पे 2 mr square है. Sorry. 2 mr square. Okay, good. So you can just take this thing. बताओ. 2 ऊपर 2 रहेगा. mr square. Sorry. 2 ऊपर रहेगा sir. 2 Okay. ऊपर Sorry. रहेगा. That will be 2 mr square. Okay. That will be 2 mr square. So what you can take? You can take common 2 mr square. And what will be this value? 1 minus 1 upon 12 pi, isn't it? Or 48. pi. Huh? 48 pi. 48 pi. Sorry. That will be 48 pi. This will be your answer. Yes? Yes, sir. Clear है ये? Yes, this will be your answer. So this was asked into IIT-JAM examination. किसी साल आया है? आप PYQ में देख सकते हो. Okay? चलो. Let's go for one more problem. This is very interesting. Clear है यहाँ तक? Yes, sir. चलो. Yes, sir. सो आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे कि पहले क्या मास दिया हुआ था और फिर उसे रिमूव किया है या फिर कंबाइंड मास m है. अगर कंबाइंड मास m है देन ऑब्वियसली यू हैव टू डू ईच एंड एवरी कैलकुलेशन. लेकिन अगर पहले से मास m है फिर रिमूव किया है देन यू कैन गो फॉर अ कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास. तो लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि वेयर यू हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास और वेयर यू हैव टू यूज द बेसिकली कंप्लीट कैलकुलेशन. ओके. Chalo. So what is this particular problem? This is very interesting. So there is a disk. Again, there is a disk. Okay. And radius of disk is that this is my x-axis. This is my y-axis. So radius of, you can just assume, radius of disk is R, capital R. Okay. And what you are going to do, you are just removing the sum portion, and the mass of original disk is m, and you are removing some portion of mass such that its radius is r by 2. Okay. So this radius is what? Something called
r/2। अगर आप r का निकालते तो क्या होता? सो आई थिंक मैंने सही पिक्चर बनाया है? नो सर, ये नो, ये पूरा ही आएगा ना। So this will become something like this, isn't it? Then this radius is r/2, isn't it? Yes, sir. यस सर। Something like this. Okay. Now we have to calculate the moment of inertia about the center of disk. ये हमें calculate करना है about center of disk, axis passing through perpendicular to this particular disk, है ना? इसके about जो axis है उसके about निकालना है. How you will calculate it? Initial mass is m. पहले का mass क्या था? m. Then just tell me what will be I of disk? क्या होगा? And mass is m. What will be this? MR square. mr square by 2, because it is disk. Okay. Now, what will be I of hole? होल के सेंटर के लिए के अबाउट क्या होगा? MR square by 8. 8. वेरी गुड. m1 r square by 8. Yes, sir. m1 r square by 8. ये तो इसके अबाउट निकाल लिया ना, बट Yes. हमें किसके अबाउट निकालना है? सो I सेंटर, सो दिस इज होल के सेंटर, दिस विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल अबाउट इट्स ओन सेंटर. But what will be moment of inertia of this particular disk about this point? बताइए. 1 R square by 8. So you have to go for, and you can assume this is your center of mass of this hole, है ना? ये आप hole का समझ सकते हो, जिसका mass m1 है. You can assume this has mass m1, which will be negative mass. Don't worry. So we have calculated moment of inertia about this point. This is basically m1 r by 2 whole square by 2. Okay. Now we have to calculate moment of inertia about this point. What will be that? Parallel axis theorem. Parallel axis theorem. So that value is equal to IO of the whole is equal to I center of mass plus m r by 2 whole square. This distance is what? R by 2. Yes, And this will be nothing m, but this will be m1. And what is your ICM? This is your ICM of the whole. समझ रहे हो मैं जो बोल रहा हूं, या फिर कोई कंफ्यूजन है? So this value is m1 r square by 8 plus m1 r square by 4, isn't it? Yes. And what is this value? 3 by 8 m1 r square. I about O. This is your point O of the whole. Now, what will be moment of inertia of complete system? IO of the complete system is equal to ID plus IO of the whole. What is ID? mr square by 2. And यहाँ पर प्लस होगा या माइनस होगा? So minus over 3 by 8, and you can take minus m1 r square. And what will be your m1? This is next challenge. What is your m1? M upon pi r square is equal to m1 upon pi r by 2 whole square. Because density is always same. So you can easily calculate this particular thing. So this and this will cancel out. What you will get? m1 is equal to m by 4. है ना? So you can just put it. And now the value is basically m r square by 2 minus 3 by 8 m by 4 r square. क्लियर है ये? कितना आएगा आंसर?
13 by 13 by 30. 32 13 mr square. mr square. Wonderful problem. Wonderful problem. ये IIT-JAM में आया हुआ क्वेश्चन है ना? So you can just use the complete thing. बताओ कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो आप बात कर सकते हो. एल्गोरिथम बड़ा सिंपल है. कंप्लीट सिस्टम जो निकाला उसको अलग से किया, कंप्लीट सिस्टम को अलग से किया, और दोनों का जिस पॉइंट के अबाउट निकालना है उसके अबाउट निकाल लिया. यस या नो? Yes, sir. है ना? चलो. Everyone is comfortable? Yes, sir. Yes. Okay, Yes. good. So let's go for next one. ऐसे क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके रखने हैं, ठीक है? सो 2-4 क्वेश्चन ऐसे जरूर करोगे. चलो. Let's go for a moment of inertia of the solid sphere. About its diameter. Let's try to calculate it. Solid sphere about its diameter. The radius is r, mass is m. How you will calculate it? So we have to calculate the moment of inertia about diameter. And now you can see how many diameter can passes through the center? Infinite. So can I choose intelligently that particular diameter which is passing through z-axis? Yes, sir. Because if we will choose it like that, then you can use the spherical symmetric system. Yes? Yes, sir. So I deliberately choose that diameter which is passing through the z-axis and which will also pass through the center of mass, which is also diameter. So what will be my, this, let us assume this will be my dm, this will be my r, and this will be my theta. Now Iz is equal to something square dm. Just tell me what will be this something square. Small r. Hmm? Small r. सोच कर बताओ. Five. R, Huh? 5 R square sine square theta. R, r sin theta, isn't it? Yes, sir. भाई r तो ये डिस्टेंस है भाई. You have to take the perpendicular distance. ये क्यों भूल जा रहे हो? और याद है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टेंसर में भी सिवेस ने शायद ये क्वेश्चन पूछा था. That y x square plus y square is perpendicular to z axis. IZ में देखे थे? याद है? yes. So this value is something like r sin theta whole square. Now you will go for dm. What will be your dm? बताइए. r square dr sin theta d theta d phi m upon 4 pi r cube by 3. सही है ना? Yes, sir. अब तो फटाफट कर सकते हैं. Yes या no? Yes, sir. चलो. So what will happen? 3m 4 pi r cube r4 dr 0 to capital R integration sin cube theta d theta 0 to pi d phi 0 to 2 pi. सारा इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए. 3m 4 pi r cube. What is this integration? r5 by 5. What is this integration? लास्ट क्लास में बात किया था. Sir, 4/3 pi. 4 by 3 है ना? And this integration is 2 pi. You can easily calculate that value is 2 by 5 mr square.
क्लियर है ये? Yes, sir. है ना? स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन डू. अगर ये 0 से π/2 रहता तो क्या होता? 2/3 हेमिस्फेयर. हमने हेमिस्फेयर का निकाला था, याद है? IZZ. That will also 2/5 mr square. Yes, sir. Just try to calculate and try to think what is going to happen. Okay? Okay. Now, let's go for a cylinder. ठीक है ये? And this is, assume this is solid cylinder. Okay? So we have to calculate the moment of inertia about z-axis. Okay, and we can assume this is my x-axis or something like this. This is my y-x, y, and this will be my z-axis. Suppose here is my origin. The length is L, radius is R, mass is M. Okay. So what will be your moment of inertia? किस coordinate system में से solve करना चाहोगे? Cylindrical. Cylindrical. Cylindrical coordinate system. So something square dm. What is this something square? Cylindrical system. Cylindrical coordinate को visualize कीजिए. Suppose यहाँ कहीं पर dm ले रहे हैं. Don't worry. We are just taking some dm here. What will be that dm? ये भी जानना होगा. And what is perpendicular distance? Anybody? Small r. Sir. Small radius r. square. Very good. That will be small r. This is your perpendicular distance, isn't it? You can take dm anywhere. And that is the z-axis. The r is nothing but the perpendicular distance from the z-axis. So you have to just go for what? Small r. What is your dm? M upon, what is the volume of this particular cylinder? क्या होता है? Pi r square. Pi r Pi square. r square L. यही होता है ना? Yes, sir. Yes. And you can just go for r dr d theta dz. This is your dm. Everyone is comfortable? So we can write Iz is equal to m by pi r square L r cube dr 0 to capital R d theta 0 to 2 pi 0 to pi. and dz where to where? 0 to L. 0 to L. So क्या आएगा आंसर? M square by M 2. r square by 2. Obviously ये किसका है? डिस्क का भी है ना? Yes, sir. है ना? और z के डायरेक्शन में अगर आप इनफिनाइट नंबर ऑफ डिस्क रखते जाओ तो क्या होगा? क्या मिलेगा It will आपको? turn into cylinder. सिलेंडर मिल जाएगा. Isn't it? So this is one of the very nice simple problem, not just a +2 level problem, but the challenging problem is next one. I am just giving you homework. Just try to do this one. जरूर कीजिए इस पूरे प्रॉब्लम को, है ना? So this is my x-axis or z-axis. Sorry, this is your, or you can take x-axis. Don't worry. And this is my perpendicular bisector. Suppose this is your z-axis. So you have to calculate the moment of inertia about the axis which is perpendicular bisector of this particular cylinder. This is your homework. Okay? Yes, sir. Clear है ये? So you can just try to do this problem very efficiently. Just try to do this one and post in your group. And next class, we will straightforward
go into very interesting topic, that is rotational dynamics. First, we will talk about angular momentum. Then we will talk about kinetic energy, potential energy, and total energy of a system, and finally torque. Okay. So every day we will finish one topic. Okay. That will take 3 classes, more maximum 3 classes. Okay. And we will solve n number of very beautiful problem. Okay. Yes, sir. चलो आज के लिए इतना ही रहने दे. Okay, sir. चलो, थैंक यू. सर कल जो हम सॉलिड हेमिस्फीयर कर रहे थे तो हमने एक हॉलो हेमिस्फीयर की बात की थी. तो उसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो डीएम इक्वल टू ए, जो हमने एरिया है वो 3 पाई आर स्क्वायर लेना है ना. 3 पाई आर स्क्वायर क्यों? सर 4 जब पाई आर स्क्वायर ना टोटल एरिया. सर यही कंफ्यूजन है, 4 पाई आर स्क्वायर कैसे आएगा सर? अरे स्फेयर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर ही तो होता है. सॉरी, हेमिस्फेयर का आप निकाल रहे हो. यस सर. तो हेमिस्फेयर का क्या होगा? दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर बाई 2. नीचे कुछ नहीं है. नीचे कुछ नहीं है. नीचे कुछ, तब तो फिर कैसा हो गया फिर? दैट इज हॉलो ना. ओके 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 सर, गॉट ठीक इट. है? यस सर, यही confusion. ओके, ठीक है. एक तरह से आप एज्यूम करो कि एक फुटबॉल है, उसको बीच से काट दिया, है ना? यस सर, यस सर. और उसमें कोई बीच में डिस्क नहीं लगा हुआ है. ठीक है? यस सर, मैंने पाई आर स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया फिर नीचे वाला. डिस्क आप नीचे सोचा कि नीचे कुछ लगा हुआ है Yes, ना? sir, नहीं, yes. वो नहीं लगा. वो लगेगा तो बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट प्रॉब्लम हो जाएगा. ठीक है? ओके सर. चलो, थैंक यू. Thank you, sir. Thank you, sir.